तो फेल गेम फैमिली फाइनली हॉगवर्ट्स लेगेसी के एपिसोड 12 में आप सभी का स्वागत है। और इन केस आपने यहाँ तक का कोई भी एपिसोड मिस कर दिया है तो 1 से लेकर 11 तक के सारे एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक काम करो, पहले आप उन सारे एपिसोड्स को देख लो ताकि यहाँ तक की जितनी भी कहानी है ना आपको अच्छे से समझ में आए। तो अभी हम लोग जल्दी से याद कर लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो मेरे कैरेक्टर रॉकी ने प्राचीन जादू के रहस्य जानने के लिए ना 2 टेस्ट कंप्लीट कर लिए और 2 टेस्ट अभी भी बाकी हैं। पर ये जो तीसरा टेस्ट है ना ये और कहीं नहीं बल्कि हॉगवर्ट्स के प्रिंसिपल प्रोफेसर ब्लैक के ऑफिस में होगा। तो ऑब्वियसली वो तो अपने ऑफिस में जाने देंगे नहीं, इसलिए रॉकी अभी प्रोफेसर फिग के पास आया है कि शायद वो कुछ उपाय बताएं कि कैसे मैं हॉगवर्ट्स के प्रिंसिपल के ऑफिस में जा सकता हूँ। तो चलिए फिर आज के गेम प्ले कंटिन्यू किया जाए। और फेल गेम फैमिली अगर आप चाहते हो कि इसको मैं खत्म करूँ हॉगवर्ट्स लेगेसी को, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एकदम फटाक से वीडियो को लाइक करो और इस वाले गेम प्ले में 4K लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दो। जैसे ही 4K लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं उसके बाद इसका नेक्स्ट एपिसोड लेते आऊंगा। तो चल फिर आज का एपिसोड स्टार्ट किया जाए। तो प्रोफेसर फिग से मुझे बात करनी है उनके ऑफिस में, ठीक है? Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrok clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrok. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well, you'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. तो प्रोफेसर फिग ज्यादा चालू निकले, रूपांतरम रस तैयार करके रखा हुआ है रॉकी के लिए। तो अगर आपको रूपांतरम रस याद है तो मतलब जिसका भी बाल उसके अंदर डाला रहता है ना, उसी के जैसा सामने वाला इंसान बन जाता है और आवाज भी उसकी वैसी ही आती है। तो ऐसा है कि रॉकी प्रोफेसर ब्लैक यानी कि हॉगवर्ट्स का प्रिंसिपल बन चुका है। वाह! How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. तो भले ही अभी मैं प्रोफेसर ब्लैक जैसा दिख रहा हूँ, लेकिन प्रोफेसर ब्लैक का जो ऑफिस है ना, उसको खोलने के लिए एक पासवर्ड चाहिए जो कि ना प्रोफेसर फिग को पता है ना मुझे पता है। लेकिन प्रोफेसर फिग ने बताया ना कि प्रिंसिपल के लिए जो एक हाउस एल्फ काम करता है उसे शायद उस पासवर्ड के बारे में पता होगा। लेकिन ये हाउस एल्फ हॉगवर्ट्स में कहीं पर भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो इस हाउस एल्फ जिसका नाम स्क्रोप है उसको ढूंढना पड़ेगा। और स्क्रोप कहाँ पर है ये बता सकती है मैडम कगावा, क्योंकि मैडम कगावा स्क्रोप को तंग किए जा रही है कि तुम अपने मास्टर यानी कि प्रोफेसर ब्लैक से बात करो और क्विडिच जिसको प्रोफेसर ब्लैक ने बैंड कर दिया उसको फिर से चालू करवाओ। तो अभी फिलहाल मुझे मैडम कगावा से बात करना है, ठीक है? Professor, a moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir.
Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. तो प्रोफेसर शार्प को भी लग रहा है कि मैं प्रोफेसर ब्लैक हूँ, यानी कि प्रिंसिपल हूँ, और असली प्रोफेसर ब्लैक ने प्रोफेसर शार्प को कोई पोशन बनाने बोला था और उसी बारे में ये मुझसे बात करना चाह रहे हैं। पर प्रोफेसर शार्प बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर बात करना ठीक नहीं रहेगा, तो इनको मैं बोलता हूँ मैं तय करूंगा क्या ठीक है क्या नहीं है। I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. तो रॉकी ने पूरे मजे ले लिए हैं। Now, to determine which student gets this rather unenviable task. I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. I thought I heard the headmaster approaching. ये गैरेथ दोस्ती है लेकिन इसको बता नहीं सकता। Gareth! Mr. Weasley, what are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor, yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I hear you're getting quite good at those concoctions you brew. I say, why don't you bring a sample of your next batch to my office? I'd like to give it a try. What? Yes, sir. I will. Thank you, sir. Thank you. On your way, Mr. Weasley. रॉकी जानबूझकर सबसे उल्टी सीधी हरकतें करवा रहा है। Well, there's one for my diary. तो प्रोफेसर शार्प ने ना दाने की दवाई बनाई है प्रोफेसर ब्लैक के लिए, और रॉकी ने बोला कि किसी स्टूडेंट को ये पोशन दे देना प्रोफेसर शार्प, वो मेरे ऑफिस लेते आएगा। Chewing with your mouth open? Where are your manners? रॉकी देख रहे हो स्टूडेंट्स को भी डांटते चल रहा है। Professor Black, how are you, sir? ओमिनस पूछ रहा है कि मैं कैसा हूँ, इससे बात नहीं करूंगा। Greetings! I mean, out of my way, children. प्रोफेसर कोगावा मिल गई। Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. तो प्रोफेसर कोगावा वही क्विडिच का गेम फिर से चालू करवाने बोल रही हैं और बोल रही है कि क्या हो गया अगर किसी को लग भी गई चोट, थोड़ा खून निकल भी गया तो क्या होता है। पर रॉकी भी प्रोफेसर ब्लैकी के रूप में तो मतलब उसी का कैरेक्टर निभा रहा है और मना कर रहा है कि ये थोड़ा डेंजरस गेम है, इसको फिर से चालू मत करवाओ। पर अब प्रोफेसर कोगावा धमकी दे रही है कि मतलब मिनिस्ट्री को मैं आपके बारे में कंप्लेन लिख के दे दूंगी कि आप यहाँ हॉगवर्ट्स में फिर से चालू नहीं करवा रहे हैं क्विडिच। तो इनको मैं बोलता हूँ एक काम करो, कंप्लेन लिख कर दे ही दो। शायद इस कंप्लेन के बाद प्रोफेसर ब्लैक को फायर कर दिया जाए, जो कि अच्छा होगा। Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. तो प्रोफेसर ब्लैक का हाउस एल्फ स्क्रोप ग्रेट हॉल में मिलेगा। What did we do to deserve him as a head? Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि रॉकी प्रोफेसर ब्लैक की पूरी इज्जत एक दिन में मतलब खत्म करने वाला है। ऐसे गैरेज जो उल्टे सीधे पोशन बनाते रहता है, उसको भी रॉकी ने जानबूझकर बोल दिया है कि अपने पोशन एक काम करना, मेरे ऑफिस लेते आना। I hope it's not about anything I've been doing. ये बात तो एक भाई प्रिंसिपल बन के घूम रहा हो ना तो सब डर रहे हैं मुझसे, लेकिन इस रूपांतरम रस का असर ज्यादा देर नहीं रहेगा, इसलिए जल्दी से पासवर्ड पता करते हैं और ऑफिस में जाते हैं। When I witness what passes for magic in these halls, I... Professor, a word, please. ये पहचान न ले।
Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. तो रॉकी ने प्रोफेसर वीजली को बोला ना कि अच्छा हो आप मुझे मिल गई, क्योंकि मुझे ऐसे भी आपसे प्रोफेसर फिग के बारे में बात करनी थी। तो मैंने सोचा है ना कि प्रोफेसर फिग को और उनकी टाइम में आजादी दे दूं। प्रोफेसर फिग अगर कम क्लास भी लेते हैं तो चलेगा। तो ये सुनकर प्रोफेसर वीजली चौंक गई, बोली कि प्रोफेसर फिग को आप टाइम में आजादी क्यों दे रहे हो, वो ऐसे भी यहाँ पर कम ही रहते हैं। तो मैं झूठ बोल देता हूँ कि प्रोफेसर फिग मिनिस्ट्री का कोई काम कर रहे हैं। Well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrok's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I am happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. मुझे प्रिंसिपल समझकर मेरे ही बारे में प्रोफेसर वीजली बात कर रही थी। A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that man. प्रोफेसर वीजली सोचिए प्रिंसिपल को आज क्या हो गया है। That ought to give Professor Fig some breathing room. अच्छा, प्रोफेसर वीजली को पता है कि रॉकी फॉरबिडन फॉरेस्ट गया था और बहुत टाइम रॉकी कैसल के बाहर रहता है, और रॉकी रुकवुड और रैनरॉक के लोगों से भिड़ा था, मतलब उनसे फेस टू फेस आया था। ये भी पता है प्रोफेसर वीजली को, पर रॉकी ने समझदारी दिखाते हुए बोल दिया कि आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं नजर रखूंगा प्रोफेसर फिग के ऊपर। अब इससे पासवर्ड पता करना है। Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. There's no doubt in Scrope's mind. तो यही है हाउस एल्फ स्क्रोप। इसके सर पे चोट कैसी लगी हुई है, चलो बात करते हैं। Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. तो असली वाला प्रोफेसर ब्लैक ना कुछ ज्यादा ही चालू है। उसने स्क्रोप को कसम दिलवाई है कि किसी को भी पासवर्ड ना बताए, और इनफैक्ट प्रोफेसर ब्लैक को भी पासवर्ड नहीं बताए, क्योंकि उसको पता था कि मैं क्यों पासवर्ड पूछूंगा, और हो सकता है कि कोई मेरा भेष बना के आए और इससे पासवर्ड पूछे, इसलिए इसको ऐसी कसम दिलवा दी है। चालू है। तो मैं ना इसको डांटता हूँ, बोलता हूँ कि तुमने मुझसे सवाल पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हो सकता है कि ये डर के बता दे, लेकिन एक और ऑप्शन है, मैं इसको बोल सकता हूँ कि मैंने अपना मन बदल लिया है, तुम कसम तोड़ दो और मुझे बता दो। लेकिन मुझे लग रहा है ना कि शायद ये डांट ही से बताएगा, तो इसको डांटने वाला ऑप्शन यूज करते हैं। How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. तो स्क्रोप ने डर के मारे पासवर्ड बता दिया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं बताया है। इसने बोला कि आपके ऑफिस का पासवर्ड वही है जो ब्लैक फैमिली का ऑफिशियल वर्ड से या मोटो जो भी बोलो, और बोल रहा है कि मास्टर आपको याद है ना, मतलब ये आपके फैमिली का वर्डिंग्स है, तो आपको याद ही होगा। तो मुझे तो याद नहीं है भाई क्या है। तो ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है ना, ये चूज करके देखते हैं। It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. तो इतनी मेहनत के बाद फाइनली प्रोफेसर ब्लैक के ऑफिस का पासवर्ड पता लग गया है। The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. तो रॉकी को जो डकार आ रही है ना, रूपांतरम रस का असर खत्म हो रहा है, यहाँ से निकलना होगा। और रॉकी ने जानबूझकर स्क्रोप को बोल दिया है कि तुमने अभी जो मुझे पासवर्ड बताया ना, इस बारे में किसी को मत बताना, और यहाँ तक कि मुझसे भी इस बारे में कभी बात मत करना कि तुमने मुझे पासवर्ड बताया था।
Made it just in time. It's wearing off. रूपांतरम रस का असर खत्म ही होने वाला है। Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. तो गार्गोइल के सामने जाकर ये पासवर्ड बोलना होगा, जो अभी पासवर्ड पता चला प्रोफेसर ब्लैक का। Incendio. Accio. प्रोफेसर ब्लैक बनकर बहुत आफत मचाई भाई, मजा आ गया। लेकिन पासवर्ड कहां पे बोलना है? क्वेस्ट बना नहीं अभी तक, वेट करो। हाँ बन गया। एक्सेस द हेडमास्टर्स ऑफिस, ठीक है। तीसरा ट्रायल वहीं पर होने वाला है, पता नहीं उसमें क्या होगा। कहां लेके जा रहा है ये? अच्छा, प्रोफेसर फिग ने ना झूठ बोलकर प्रोफेसर ब्लैक को हॉग्समीड भेज दिया है, वरना अगर वो मिल जाता ना तब तो भाई लेने के देने पड़ जाते। मुझे लग रहा था कि प्रोफेसर ब्लैक का ऑफिस यहीं कहीं होगा। अच्छा, काफी ऊपर है। मतलब डम्बलडोर का ऑफिस कहां रहता था, याद है? अच्छा खासा प्रोफेसर ब्लैक बना हुआ था। रॉकी बन के अब कोई इज्जत नहीं दे रहा है वरना सब डर डर के घूम रहे थे। हेडमास्टर के ऑफिस पहुंचते पहुंचते ना रॉकी ऊपर पहुंच जाएगा। कितनी सीढ़ियां हैं? पहुंचे? नहीं, अभी भी नहीं। कोई शॉर्टकट भी नहीं था वहां पर, मैंने आई थिंक एक्टिवेट नहीं किया है यहां पर। ओ नहीं किया था यहां पर। अरे इतनी सीढ़ी बेचारे को चढ़वा दी। अब यहीं पर पासवर्ड बोलना होगा। इस एरिया में आई थिंक मैं पहली बार आया हूं। नहीं, हाँ लग तो रहा है कि फर्स्ट टाइम आए। बस प्रोफेसर ब्लैक नहीं मिल जाए यहां पर। Revelio. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. रॉकी ने फ्रेंच में पासवर्ड बोला, अब तो खुल ही जाएगा। वाह, मुझे लगा कि शायद डोर का पासवर्ड होगा, इसने तो सीढ़ी ब्लॉक कर दी थी। I wonder if all the elite wizarding families have a motto. रॉकी सोचा जितनी भी रईस फैमिली है सबका कोई ना कोई मकसद है क्या? Revelio. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. तो रॉकी ने बताया कि प्रोफेसर फिग की दिमाग की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और इन्होंने बोला कि पेडेस्टल पे जाओ और किताब पढ़ो। ओके, मैं तैयार हूँ। I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? तो रॉकी समझिए कि ये तीसरा टेस्ट सिर्फ ऐसा तो नहीं ना होगा कि किताब पढ़ना होगा इसमें। तो फिर जेरल ने बोला कि तुमने सही सोचा, एक बार तुम किताब पढ़ो उसके बाद बात करते हैं। That must be the pedestal. तो तीसरा टेस्ट किताब के अंदर होने वाला है। मैं किताब के अंदर चला गया और प्रोफेसर ब्लैक की चाय भी झूठी कर दी है। वो तो बनता था उसका, क्योंकि वो है बहुत खड़ूस प्रिंसिपल। Where am I? ये क्या है? Professor Fitzgerald, can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. ये ब्लैक एंड व्हाइट में मेरे साथ क्या होने वाला है? You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. माँ कसम भाई, ये डायरेक्ट मौत आ गई मुझे मारने के लिए। रॉकी गयो।
ओए होए होए, खतरनाक। तो मेरा काम है फिट्जजेरल्ड को ढूंढना, और इन्होंने बोला है जैसा दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं है, और मुझे ये जो मौत है ना उससे छुप के रहना है, वरना एक बार में मर जाऊंगा मैं। वाह, मजा ही आ गया। मतलब ये टेस्ट तो कुछ ज्यादा ही हार्ड है। इतना स्लोली जाना है ना इनके बगल से, गलती से भी एहसास हो गया ना कि कोई है, एक बार में मार देंगे मुझे। ये आदमी बोल रहा है कि जब मेरे पास मौका था मुझे भाग जाना चाहिए था, मैं आजाद हो जाता। They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? तो किसी भी तरह मुझे फिट्जजेरल्ड को ढूंढना है। I need to time this just right. खतरा तो बहुत ज्यादा है, गलती एक भी नहीं होनी चाहिए। I see. A staircase straight ahead. सीढ़ी नजर आ रही है, लेकिन रास्ते में ये जो मौत खड़ी हुई इसका क्या? हाँ, जा रही है, जा रही है। रास्ता खाली लग रहा है, दौड़ू क्या? नहीं नहीं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि डेथ से यानी कि मौत से मुझे फाइट करना पड़ेगा। देखते हैं। Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. तो रॉकी ने अच्छा प्लान बनाया है कि अगर ऊपर चले जाते हैं, यानी मर के ऊपर नहीं, सीढ़ी से ऊपर चले गए तो ये लोग मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। अच्छा आइडिया है। कितने दुश्मन है ना, एक बार मैप में देखो। This is my chance. I'm coming, Neve. तो रॉकी के पास यही मौका है, पर ये मौका नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही खतरा है। Too many. I must cross this road as fast as I can. बहुत सारे हैं यहाँ पर, ठीक से और आराम से पार करना होगा। एक तो बिल्कुल रास्ते में खड़ा हो गया, कैसे जाऊं मैं उधर से? रिस्क लिया जाए क्या, या वेट करूं? That's where I need to go, but I need to find a way past them. जाना तो उधर ही है, लेकिन ये लोग रास्ता छोड़े तब तो। देखना मत, शक हो गया है। ओहो भाई, जान हलक पे अटकी हुई है, बच गया मैं। यही मौत है और वो सामने ही खड़ी हुई है। चलो ठीक है, मौत को गले लगाते हैं। Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. कोई दूसरा रास्ता देखना होगा। That doorway looks like the only safe way. Closed tight. No way but forward, I suppose. तो ऐसा है कि मौत ने चारों तरफ से घेर लिया और आगे जाने के सिवाय और कोई रास्ता है भी नहीं। अरे रे रे रे, इधर ही आ रहा है, इधर मत आ। Now's my chance. रॉकी बोल तो रहा है कि यही चांस है, लेकिन मुझे चांस नहीं लग रहा है। देखना मत, निकल जा भाई, निकल जा। That's the way forward. तो इसके पास जाना है, ये है क्या? ओ भाई साहब, ये वो शॉल नहीं है जो हैरी पॉटर पहन के गायब हो जाता था। Can this be? I think I'm invisible.
तो 3 भाइयों को ना मौत ने ये शॉल खुद बना कर दी थी, इसलिए अब खुद मौत भी मुझे नहीं देख सकती है। अब मैं गायब हो चुका हूँ पूरी तरह से, किसी को शक भी नहीं होगा। तो अगर आपको ये 3 भाइयों वाली कहानी जाननी है कि शॉल कैसे बना, तो इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। They can't see me at all. I can get closer to them. ये क्लोक ऐसा है कि मौत भी मुझे नहीं देख सकती है। इनके सामने से करीब से निकल जा सकता हूं मैं, शक भी नहीं हो रहा है। वाह, This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? अब तो रॉकेट टेस्ट में पास होना चाहिए, नहीं? आई होप के पास हो गया हो, बस यही था ना। You have run death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. अरे इस बार मौत से छुप नहीं सकता मैं। Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. एक जादुई छड़ी दे रही है मुझे और बोल रही है कि उसकी खतरनाक शक्ति को वेस्ट मत करना। भाई ये वही छड़ी है क्या, डम्बल डोर वाली? पता नहीं, मुझे वैसी ही लग रही है। मौत को इससे हराया जा सकता है, पता नहीं, देखते हैं। एल्डन वॉन्ड है ये। I've never felt such power. तो इस छड़ी के मिलने के बाद रॉकी को इतनी ताकत आज तक महसूस नहीं हुई। ये छड़ी मेरे पास ही रहेगी ना, लेना मत प्लीज। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ट्रायल खत्म होने के बाद मुझसे छड़ी छीन ली जाएगी। अगर ऐसा हुआ ना, बहुत बुरा लगेगा। तो अभी भी मेरा ट्रायल खत्म नहीं हुआ है, फिट्जजेरल्ड को मुझे ढूंढना है। वैसे फिट्जजेरल्ड ने बोल दिया था कि इस बार तुम छुप नहीं सकते, यानी कि इस बार ही फाइट करना होगा। अच्छा, ये सब मौत की परछाई है। वो जो मौत है ना मेन, उसकी परछाई है ये सब। तो मौत की परछाई की तो वाट लगा दी, लेकिन मौत को हराना मुश्किल होगा। इससे पहले जो 2 ट्रायल हुए थे वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान थे। ये तीसरा वाला ट्रायल ऐसा होने वाला है, पता नहीं था मुझे। मौत ने अपनी कुछ ज्यादा ही परछाई नहीं भेज दी है। ऊपर से ये कुत्ते भेड़िए पता नहीं क्या है, जो भी है। अच्छा, ये मैंने देखा ही नहीं, मेरे पास एक भी हेल्थ पोशन नहीं है। मतलब कि इसी हेल्थ में मुझे सब कुछ करना होगा। खत्म क्यों नहीं हो रहे भाई ये लोग? कोई तो
विगन वर्ल्ड पोशन दे देता मुझे, सब वेली परछाई थी। फाइनल मिशन करने से पहले ना अपना साइड मिशन करके कुछ ज्यादा ही लेवल बढ़ाना होगा, वरना फाइनल मिशन में बहुत दिक्कत आ जाएगी। नहीं, साइड मिशंस करने होंगे बहुत सारे। फिलहाल तो अभी फिट्जजेरल्ड को ढूंढना है। टेस के नाम पर रॉकी को मौत से भिड़वा दिया, और कोई नहीं मिला था फिट्जजेरल्ड। ये कौन है, कोई मरा हुआ है? ओह, विगन वर्ल्ड पोशन, थैंक यू सो मच। तो अब मौत से फाइट करनी है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? अच्छा, मौत अभी फिलहाल खुद नहीं आ रही है, अपनी परछाइयों को भेज रही है और ये अपने ट्रोल को भेज रही है। सही है। ट्रायल के टाइम पर डार्क मैजिक यूज नहीं कर सकता, वरना इनको बताता। वो जो कर्सेस वाले नहीं थे, इम्पेरियो ये सब यूज करता। तो ऐसा ही कि ये लास्ट विगन वर्ल्ड पोशन था। अब जो करना है इतनी हेल्थ में करना है। बहुत अच्छा। इतनी सी हेल्थ बच गई। ये ट्रोल बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। जिसको लगा ना कि रॉकी डर गया, वो अपनी अर्थी पे घर गया। ट्रोल के अटैक से मुझे बचना है बस। ये जब मरने का खतरा बढ़ जाता है ना, तो खेलने में और मजा आता है, पता है? ये ट्रोल लग तो रहा है कि लास्ट ही है, और मेरी इतनी सी हेल्थ बच गई, ना के बराबर। Descender, Bombarder. Defender, Descender, Predator. Defender, Depulsor. Bombarder. जीरो हेल्थ के साथ मौत से फाइट करना है। आजा, चल। ओके, तो मेरी हेल्थ रिकवर कर रही है, जल्दी रिकवर कर जा। इतनी सी रिकवर हो पाई, लेकिन ठीक है, चलो काम चला लूंगा मैं। एक ही लेवल तो उसका ज्यादा है, मतलब इतने अटैक्स करने के बाद भी इतना कम डैमेज। ये डॉगी बस अटैक करने ही वाला है। हाँ, मैं तैयार ही था। Defender. Stupid. Bombarder. Stupid. Defender. Bombarder. Depulsor. Bombarder. Defender. Predator. Stupid.
दोनों ट्रोल मर गए ना, बाकी सबको तो संभाल ही लूंगा, फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। Descendo. Defendo. Depulso. Defendo. Bombarda. कितनी परछाई भेजेगा, अब आ ही जा फाइट करने। कहां गया? ये तो चला गया। अब ट्रायल खत्म हुआ या फाइट करना? नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद खत्म हो गया है। A simple stone. This must be for me. एक पत्थर रखा हो, ये सॉर्सरस स्टोन है क्या? इसको लेना है, ठीक है। You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing. I can't believe she's dead. Oh, poor Neve. Gone so young. Let us always honor her memory. We won't be the same without her. सब रो रहे हैं किसी लड़की की मौत पर, और मौत उसको लेने आई है, मतलब उस लड़की को जो मर गई है कौन ये लड़की? और फिर जनरल ने बोला है कि अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है, उस लड़की के पास जाओ जो मर गई है। You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. तो ये लड़की और कोई नहीं बल्कि खुद फिट्जजेराल्ड थी, और इन्होंने बोला कि तुमने मुझे ढूंढ लिया, पर इस स्टोन से तुम मुझे जिंदा नहीं कर सकते हो, पर इस पत्थर के जादू की वजह से ना इनकी परछाई आ गई है और इसको फॉलो करना है, ठीक है? But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. बोल रही है कि तुम अंधकार कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अंधकार करना हमेशा जरूरी ही है। तो अब इनकी याद देखने मिलेगी। Remember that as you witness my memory. तो ये बोल रही है जो अंधकार वाली बात मैंने तुम्हें बताई ना, वो चीज तुम याद रखना जब अभी तुम मेरी याद को देखोगे। तो चलो देखते हैं इनकी याद में क्या है। इसी डोराई के बारे में कुछ होगा, देखना है कि क्या है। Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. इसने जो अपने पापा के अंदर से दर्द निकाला था ना, उसको इसीडोरा कहीं पे जमा कर रही है। What are you doing? इसीडोरा की सटक के ये फिट्जजेराल्ड के अंदर से भी दर्द निकाल लिया, और इसको अब ये यूज करेगी अपनी पावर बढ़ाने के लिए। Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. इसीडोरा को रुकने बोल रही है। You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to
embrace it. इसिडोरा बोल रही है कि तुमने इस पावर को रखा क्योंकि तुम इससे डरती हो, तो जितना भी दुनिया का दर्द है ना सब निकाल के ये स्टोर करने वाली है, और ये सब दर्द को जमा करने के लिए ना इसको एक तहखाना बनाना था, और इसलिए इसिडोरा ने गॉब्लिन को भी बता दिया इस बारे में। इसलिए फिट्जजेरल्ड ने रॉकी को बोला था कि तुम अंधकार कर सको इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा अंधकार करना जरूरी है, यानी कि भले ही तुम दर्द खींच सकती हो इसका मतलब ये नहीं है कि दर्द खींच ही लो, उसका क्या असर पड़ेगा वो तो पता नहीं, लेकिन कुछ बुरा ही होगा ऑब्वियसली। तो तीसरा ट्रायल खत्म हो गया और इसिडोरा के बारे में बहुत कुछ पता चला। इसिडोरा अब थोड़ी थोड़ी पागल भी हो रही है, ये तो क्लियर है, और अब मैप चेंबर में जाकर इन सब बारे में प्रोफेसर फिग को बताना है। ओके, 3 ट्रायल खत्म कर दिए, एक और ट्रायल होगा, उसके बाद मुझे लगता है कि गेम भी बस खत्म ही होने वाला है। Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. तो ये है प्रोफेसर बकार, और मुझे लगता है कि चौथा ट्रायल इन्हीं का होने वाला है। और रॉकी को ये बोल रही थी कि तुम तो इतने मतलब जवान हो, तुमने 3 ट्रायल खत्म कर लिया, और रॉकी बोल रहा है कि इसिडोरा दूसरे के दर्द को अपने अंदर ले रही थी, तो इन्होंने हाँ बोला। I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrok has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. ये बकार को यकीन नहीं है रॉकी के ऊपर पूरी तरह से। It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrok has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrok. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. तो रॉकी बस प्रोफेसर बकार से पूछ रहा था कि इसिडोरा दूसरे की इमोशंस को, जज्बातों को अपने अंदर कैसे ले रही थी। तो प्रोफेसर बकार को शक हो गया कि तुम मतलब इतना क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो, और इसलिए उनको लगने लगा कि रॉकी भी शायद गलत आदमी है और ये भी इस पावर को भी ना गलत तरह से यूज करेगा। और जब रॉकी ने बताया कि रैनरॉक को देखो पहले से पता है, वो हो सकता है कि इस पावर के पास पहले ही पहुंच जाए, तब बकार ने बोला कि मैं बाकी तीनों से डिस्कस करता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि चौथा ट्रायल कहाँ है। I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. तो याद है ना, सेबेस्टियन ने मुझसे झगड़ा कर लिया था जब इसको बताया था मैंने कि लॉर्डगॉक गॉब्लिन मेरे साथ काम कर रहा है, पर अभी ये बोल रहा है कि मुझे ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था, और ये मुझे मिलने के लिए बुला रहा है, तो इसका मेन मिशन है। पर अभी ये लॉक है, मुझे अपना लेवल बढ़ाना होगा तब ये अनलॉक होगा। ओके, तो कुछ साइड मिशंस करने पड़ेंगे, कौन सा किया जाए। तो एक ड्रैगन जिसको आजाद किया था उसका एग अभी भी मेरे पास ही है, तो पॉपी से बात करना है इस बारे में, ठीक है। हॉगस्मीड में मिलना है पॉपी से।
Does it get any more cozy than Hogsmeade? तो ड्रैगन का जो एग उठाया था उसको लौटाना है, पर ड्रैगन कहाँ गया इस बारे में पॉपी ने बोला था कि वो पता करके बताएगी। पॉपी बाहर नहीं मिल सकती थी। Courage to go into the forest. ये कौन है? पॉपी कहाँ है? अच्छा पॉपी ये रही। Over here. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. तो पॉपी को याद आ रहा है ना कि ड्रैगन को कैसे टेंट में कैद करके रखा था गॉब्लिन्स ने, तो उसे ये सोचकर भी गुस्सा आ रहा है। और रॉकी समझ गया कि गॉब्लिन्स ना ड्रैगन को कंट्रोल करते हैं उसके गले में कॉलर पहनाकर। तो पॉपी बोल रही है कि जिस ड्रैगन का अंडा है ना उसको ढूंढते हैं, और उसके गले में तो कॉलर है नहीं, तो उसको अंडा लौटा देते हैं। That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? तो पॉपी बोल रही है कि मेरे वजह से विक्टर रुकवुड से तुम्हारी दुश्मनी और बढ़ गई है, और ये मैं पहले पूछना नहीं चाह रही थी, लेकिन अब पूछना जरूरी है कि तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, तो इसको बता दिया जाए। चलो इसको बता देते हैं। Rookwood is working with Ranrok, and Ranrok is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. तो पॉपी मेरे राज को राज रखेगी। I'll let you know when I have news of her location. और पॉपी ने बोला कि जब ड्रैगन का पता लग जाएगा तो वो मुझे बता देगी, लेकिन फिलहाल इसमें कोई मिशन तो था नहीं, यानी कि लेवल बढ़ेगा नहीं। वाह वाह पॉपी वाह, टाइम वेस्ट करवाया, एक और साइड मिशन करना पड़ेगा, और इस बारी मिशन करना होगा। सिर्फ अगर जाकर बात करूंगा ना तो लेवल बढ़ेगा नहीं। चलो देखते हैं कौन कौन सा साइड मिशन है। ऐसे तो बहुत सारे साइड मिशंस हैं। द लॉस्ट चाइल्ड, ओके, तो ऐसा है कि नैटी से मिलना होगा इस साइड मिशन के लिए। अब नैटी, ओके, कहां पर है, कितनी दूर है नैटी? ये देखो यहां पर है। नैटी तुम बात मत करना, तुम साइड मिशन करना मेरे साथ ताकि मेरा लेवल बढ़े। You are here. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. तो यहाँ पर जो आदमी रहते हैं ना, उनके पास हार्लो के खिलाफ सबूत है। हार्लो याद है ना, विक्टर रुकवुड का राइट हैंड मैन। Why did he challenge that horrible man? Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? तो मिस्टर बिकल जिनसे सबूत लेने आए थे हार्लो के खिलाफ, तो मिस्टर बिकल की वाइफ बता रही कि उनके हस्बैंड को मार दिया है हार्लो ने, क्योंकि हार्लो इनके हस्बैंड को काफी टाइम से धमकी दे रहा था और इनका बेटा लापता है। I don't mean to be grim, but could Harlow have taken him? Archie's satchel is missing, so he may have left on his own. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here.
He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave in case he comes back home. तो ये बोल रही है कि हार्लो ने इनके बेटे को नहीं उठाया है। इनके बेटे आर्ची की आदत है कि जंगल में थोड़ा घूमने निकल जाता है, पर इनको ये भी डर लग रहा है ना कि अगर इनके बेटे आर्ची ने अपने पापा को मरते हुए देख लिया होगा हार्लो के हाथों, तो ऐसा तो नहीं कि ये सब देखकर वो मतलब डर कर भाग गया है। तो इनके बेटे को ढूंढते हैं। We'll find your son, Mrs. Pickle. Thank you. What am I going to do? तो मैं और नैटी इनके बेटे को ढूंढेंगे, ओके? Please do not worry, Mrs. Pickle. We will bring Archie home. When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Pickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. तो मिस्टर बिकल ऑफिसर सिंगर को सबूत दे रहे थे हार्लो के What did खिलाफ। Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need... Revelio. This must be Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. तो आर्ची का टेंट यही है। Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. तो रेवेलियो से देखना होगा ना कि आर्ची कहाँ गया। There! Archie's footprints. He went this way. आर्ची के टेंट को किसी ने तोड़ा है, यानी कि उसको कोई ढूंढने आया था। फिलहाल ये जो आर्ची के पैरों के निशान है ना, इसको फॉलो करना है। I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. तो नैटी बोल रही है कि हार्लो जैसे लोग ना बच्चे को भी मारने से पहले एक बार भी सोचेंगे नहीं, तो इससे जल्द आर्ची को ढूंढना होगा। Wolves, prepare for a fight. नैटी बोल रही मुझे अच्छा नहीं लगता है जब तुम डार्क मैजिक यूज करते हो। मतलब ऐसे मार दूं तो कोई बात नहीं, लेकिन डार्क मैजिक से मारा तो गलत। ये क्या बात हुई? I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. Revelio. We should look around. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. यहाँ से आर्ची कहाँ गया? Archie went this way. हार्लो ना आर्ची का पीछा कर रहा होगा। उसने अपना बैग भी आर्ची ने यहीं छोड़ दिया है। I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. नैटी बोल रही है कि हार्लो आर्ची का पीछा क्यों कर रहा है? इसके पीछे कोई वजह है। I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. नैटी बोल रही है कि अगर आर्ची ने अपने पापा का मर्डर होते हुए देख लिया होगा ना, तो इस चीज से वो कभी उबर नहीं पाएगा। We will need Revelio again. Revelio. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. तो यहाँ पर बहुत सारे पैरों के निशान हैं, यानी कि हार्लो पीछे लग गया है आर्ची के। Thestrals. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort. एक थ्रेस्टल को बैग में रख सकते हैं। I think those are I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and helpless. Levioso. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Revelio. Let us keep moving.
We must find Archie. तो नैटी की जब पापा मरे थे ना तो वो अपने पापा की साथी थी और जिसने भी मौत को करीब से देखा है वो थ्रस्टल्स को देख सकता है और इसलिए नैटी को भी थ्रस्टल्स नजर आ रहे हैं। Taking in children now, are we? Better not be expected to feed. Did you hear that? Have a look then. What was that sound? Perhaps it's dinner, Ranrok. क्रूशियो यूज करने का टाइम आ गया है। Aha! Back from more. Knew you were still hanging about. Defender! Confringo! No! Incendio! Bombarda! Protego! Everyone! Bombarda! Expelliarmus! Ha! You're easier to spot than an erupt! It's mine! It's nothing! Descendo! Protego! तो सारे मर गए लेकिन आर्ची नहीं मिला है। They got what they deserved. देखो ये बात है कि भले ये सब डार्क मैजिशियंस है लेकिन रॉकी भयंकर मर्डरर है भाई, कितने लोगों को उड़ा दिया है। तो टेंट अंदर से और बड़ा है, आर्ची को कहां ढूंढा जाए? आर्ची Revelio. I don't think he saw it. Imperium. He's just a child. We should release him. This is the sort of thing that would draw unwanted attention. Oh, what's the light go out of your eyes? Bombarda. Defender. मेरा बस इस मिशन को करने के बाद ना लेवल 24 हो जाएगा, उसके बाद सेबेस्टियन वाला कर पाएंगे मेन क्वेस्ट। Back from more. अच्छा अच्छा, ये लड़की कैटरीन ना मेन बॉस टाइप की, ठीक है। You're easier to spot than an erupt. You're going to regret that. That's the best you can do. Bombarda. इसके ऊपर फिर से इंपेरियो लगाना होगा। They got what they deserved. तो ऑलमोस्ट लेवल 24 हो ही गया, सही है। तो आर्ची की आवाज नीचे से आ रही है, मदद मांग रहा है लड़का, लेकिन नीचे जाना कैसे है? Revelio. आर्ची आवाज आ गई है, अच्छा यहां से जाना है, वही तो। I need your help. Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. तो ये ताला खोलना पड़ेगा, ठीक है? Aloha Mora. अरे भाई ये ढूंढने वाला।
चलो एक मिल गया है, लाल वाला ढूंढना है सिर्फ। A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. आर्ची ने अपने पापा का मर्डर करते हुए देख लिया था हार्लो को, इसलिए हार्लो ने इसको उठा लिया था। ओके, तो अभी आर्ची की मॉम से बात करना है, ठीक है? Oh, Archie, you're here! Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. तो इसके पापा के दोस्तों को भी हार्लो मारने वाला है। Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. तो रॉकी ने बोला ना कि आपके पति के दोस्त भी खतरे में हैं, तो आप बताइए कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि मेरे पति काफी पावरफुल जादूगर थे, तो उनको जब हार्लो ने मार दिया तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो तुम्हारे पीछे भी आए। It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. तो आर्ची को घर लाने के लिए थैंक यू बोल रही हैं। Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. नैटी भी इनकी मदद करना चाहती है। I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. Joanna had lost the both of them. तो नैटी ये पता करेगी ना कि मिस्टर बिकल के दोस्तों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है हार्लो, और उसके बाद ये मुझसे बात करेगी। फिलहाल मेरा लेवल 24 हो गया है, यानी कि अब सेबेस्टियन का मिशन मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। और याद है ना, इसी का मिशन जब आगे मैं कंप्लीट करूंगा तब मुझे मिलेगा अवाडा केडावरा, यानी कि जो किलिंग कर्स है। तो ऐसा है कि हॉगवर्ट्स लेगेसी का आज का एपिसोड हम लोग यहाँ पर खत्म करेंगे। और अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है भाई, तो 4K लाइक्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, और उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। और मैंने एक नई सीरीज भी स्टार्ट कर दी है, डेज गॉन। अगर वो नहीं देखा है तो देख लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।